This is the sixth video on British monarchy, and if you haven't watched all these videos, you can watch it going to the playlist on the name of British monarchy. And today we are going to discuss about House of Lancaster. Henry IV, 1399 to 1413, his ruling time period. The son of John of Gaunt, the third son of Edward III. Henry returned from exile in France to reclaim his estates previously seized by Richard II. What happened with this monarch is that Richard II occupied his estate, and Henry returned after exile to reclaim his estate. He was accepted as king by parliament. Henry spent most of his 13-year reign defending himself against plots, rebellions, and assassination attempts. Most of the rebellions, you can say, took place in his reign. That was the condition, very, you can say, polite condition of this man. In Wales, Owen Glendower declared himself Prince of Wales and led a national uprising against English rule. Back in England, Henry had great difficulty in maintaining the support of both the clergy and parliament, and between 1403 to 8, the Percy family launched a series of rebellion against him. क्या होता है कि जो पर्सी फैमिली होती है ना, इसके खिलाफ बहुत सारे रिबेलियंस खड़े कर देती है इस हैनरी के खिलाफ. हैनरी हैड ग्रेट डिफ़िकल्टी, और ना जो हैनरी था, ये किंग था, इसे बहुत मतलब डिफ़िकल्टी फेस करता है ये मेंटेन करने के लिए क्लर्जी और पार्लियामेंट को 1403 और 1408 के बीच. वेल्स में क्या होता है कि ओवेन ग्लैंडोवर है ना, जो एक मोनार्क था, उसने ना अपने आप को प्रिंस ऑफ वेल्स डिक्लेयर कर दिया, और ना बहुत सारे अपराइजिंग, यू कैन से, उसने विद्रोह किए इंग्लिश रूल के खिलाफ. इससे भी इसे ना हैनरी को बहुत सारा मतलब ट्रबल फेस करना पड़ा अपनी लाइफ में. हैनरी द फर्स्ट लंकेस्टेरियन किंग died exhausted, probably of leprosy, at the age of 45, and he died at the very young age of 45. You can say with a very fatal disease, that is leprosy. Henry V, 1413 to 1422, his time period of ruling. The son of Henry IV, he was a pious, stern, and skillful soldier. Henry had honed his fine soldiering skill, putting down many rebellions launched against his father, and had been knighted when aged just 12. क्या होता है कि ना, ये हैनरी ने अपने जो सोल्जरिंग स्किल्स थी, वो ना बहुत सारे रिवेलियंस हुए जो इसके फादर के अगेंस्ट लॉन्च किए गए थे अदर किंग्स के द्वारा, और इसने ना उन सब को प्रेस डाउन कर दिया. और ना उसे मतलब एट दी वेरी अर्ली एज, यू कैन से वेरी टेंडर एज ऑफ 12, ही हैड बीन नाइटेड. नाइट के बाद ही दी गई इसे. ही प्लीज्ड हिज नॉवेल्स बाय रिन्यूइंग द वॉर विद फ्रांस इन 1415. और ना जो अपने नॉवेल्स थे ना, एक ये क्लास है, इससे ना उनको ना इसने खुश कर दिया 1415 में, जब वॉर हुआ ना फ्रांस के साथ. इसने ना अपने सोल्जरिंग स्किल्स दिखा के सबको प्लीज्ड कर दिया. The face of tremendous odds, when ups and downs were taking place, he beat the French at the Battle of Agincourt, losing just 400 of his own soldiers, with more than 60,000 Frenchmen killed. He only lost his 400 soldiers and killed, you can say, 6,000 Frenchmen. On his second expedition, Henry captured Rouen, was recognized as the next king of France, and married Catherine. This man was recognized as the next king of France after capturing Rouen,
and he married Catherine, the daughter of the lunatic French king. The lunatic French king was Rouen. Henry died of dysentery whilst campaigning in France and before he could succeed to the French throne, leaving his 10-month-old son as King of England and France. He died because of dysentery. You can say it is a very fatal disease characterized by the inflammations of intestines. That is called dysentery. He was campaigning in France and before he could succeed to the French throne, he was, you can say, died, leaving his 10-month-old son as King of England and France. Henry VI, 1422, deposed 1461. He was deposed because of some reason. He was dethroned, you can say, in 1461. Beginning of Wars of the Roses, gentle and retiring, he came to the throne as a baby of the very young age of 10 and inherited a losing war with France. The 100 Years' War finally ended in 1453 with the loss of all French lands except for Calais. और ना इसे ना 1461 में इसे डिपोज कर दिया गया, मतलब ऐसे राजपद से ना हटा दिया गया। और जब बिगनिंग हुई ना वॉर्स ऑफ रोजेस की, ये ना उस समय ना बहुत जंग था, बहुत ही मतलब इसकी एज थी, 10 साल की उम्र थी जब ये मतलब गद्दी पे बैठा। और ना एंड इनहेरिटेड ए लॉसिंग वॉर विद फ्रांस। और ना फिर इसे मतलब क्या बना एरियानिटिस में एक वॉर, इसे एक वॉर लड़ना पड़ा, 100 Years वॉर, जो कि एंड हुआ 1453 में। और इससे ना लॉस हो गई ऑल फ्रेंच लैंड्स, इसका जो ना इसके जो इसके मतलब ऑक्यूपेशन में थी, एक ही लैंड बची थी वो थी कलाइस की। The king had an attack of mental illness that was hereditary in his mother's family in 1454 and Richard Duke of York was made protector of the realm. क्या होता था ना, जो ये किंग था ना, इससे ना मेंटल इलनेस हो गई थी जो कि इसे हेरेडिटरी में आई थी। रीजन बीइंग दैट बिना उस समय के जो मोनार्क्स थे ना, ये ब्रिटिश मोनार्क, ये अपने रिलेटिव्स में बहुत नज़दीक रिलेटिव्स में शादियाँ कर लेते थे, जिसके कारण ना इनमें ये मेंटल डिसीज हो गई। और ऐसा साइंटिफिक भी है कि ना हमें गोत्र से भी बार विवाह करना चाहिए, ये साइंटिफिक है और ऐसा करना चाहिए। और ना क्लोज रिलेटिव्स में और अपने सगे भाई बहनों से शादी करने के बाद इन्हें बहुत से नुकसान उठाने पड़े। And Richard Duke of York was made protector of the realm. The House of York challenged Henry VI's right to the throne and England was plunged into civil war. जो हाउस ऑफ यॉर्क था ना, उसने चैलेंज किया हेनरी सिक्स का राइट थ्रोन पे, और ना जो इंग्लैंड है फिर सिविल वॉर में टेक प्लेस कर गया, इसमें सिविल वॉर होने लग गई। The Battle of St. Albans in 1455 was won by the Yorkists. और ना 1455 में जो बैटल ऑफ सेंट एल्बंस की लड़ी की, उनको ना योर्किस्ट ने जीत लिया। हेनरी वॉज रिस्टोर टू थ्रोन ब्रीफली इन 1470। फिर ये हेनरी रिस्टोर कर गया थ्रोन में थोड़े समय के लिए 1470 में। Henry's son Edward, Prince of Wales, was killed at the Battle of Tewkesbury one day before Henry was murdered in the Tower of London in 1471. हेनरी का जो सन था ना एडवर्ड, जो कि वेल्स का प्रिंस था, वो ना बैटल ऑफ ट्यूकेसबरी में मतलब किल्ड मारा गया है एक दिन पहले हेनरी की मर्डर से। हेनरी का मर्डर कहाँ हुआ? टावर ऑफ लंदन में इन 1471। हेनरी फाउंडेड बोथ ईटन कॉलेज एंड किंग्स कॉलेज, वेरी फेमस कॉलेज इन कैम्ब्रिज।
And every year the provosts of Eton and King's College lay roses and lilies of the altar which now stand where he died. और ना इसने जो इटोन कॉलेज है और किंग्स कॉलेज है इसको इस्टेब्लिश किया है। एंड वो ना प्रत्येक साल एवरी ईयर द प्रोवोस्ट ऑफ इटोन एंड किंग्स कॉलेज, इन पे ना किंग्स कॉलेज हुआ और प्रोवोस्ट ऑफ इटोन हुआ, इन पे ना रोजेज और लिलीज चढ़ाई जाती हैं। उसकी जो आल्टर है, जो उसकी मूर्ति बनी हुई है ना हेनरी की, उस पर विच नाउ स्टैंड्स वेयर ही डाउ, जहाँ वो मतलब पास्ट अभी हुआ था ना वहाँ ये उसकी मूर्ति, उस पर ये रोजेज और लिली चढ़ाई जाती हैं। द हेयर कम्स and here comes the end of this video. Thank you.